गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर जो आम प्रति वीक कवर करे जोटा कि ओएस आउ स्टेट एग्जाम्स की रेलिवेंट रहिबो। आज आम प्रीवियस वीक रो कवर करबा स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ फेब्रुअरी टू 1st मार्च। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी क्लियर जो माने भी एठी लाइव अछंती लाइव चैट रे कहीं जणे भी क्लियर मते टिके कर दियंतु ऑडियो एंड मु एठी जो पीपीटी ओपन करिके रखिची सेटा क्लियर अछि कि नाही, स्पेशली ऑडियो। I'm giving 1 minute here and after that I will simply assume कि सब किछि clear अछि and I will start the class. Okay, मामुन कहउछन्ती clear अछि। as usual जेमति कि क्लास पूर्वरु प्रीवियस क्लास रे जहां भी मु एमसीक्यू देइथिली ताको फर्स्ट हमें डिस्कस करबा पर एमसीक्यू मु 10 to 15 seconds देबी depending on the difficulty of the MCQ, but if MCQ is difficult नाही, easy to moderate ही अछि, बहुत maximum easy ही अछि। सो समस्ते मते एटी लाइव चैट रे तार आंसर देबे, देन आमे तार गोटे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देखिबा एंड आंसर देखिबा, देन आमे हमर जहा क्लास रे जहा टॉपिक्स अछि ताऊ कवर करिबा। ओके, एंड क्लास रो जहा भी पीडीएफ अछि ताकू कमेंट सेक्शन रे लिंक प्रोवाइड हेजिबो, से लिंक ऊपर क्लिक करिकरी पीडीएफ डाउनलोड करि परिबे फॉर रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूची ओएस एंड आईएएस 2026-27 पाई की जो माने प्रिपेयर होउथिबे से मानको पाई एटी कोर्स लॉन्च हेची। प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू फाउंडेशन बैच एटी लॉन्च हेची जोटा कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड रे अवेलेबल रहइबो, ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे अवेलेबल रहइबो एंड एथरे वन ऑन वन मेंटरशिप रो भी गोटे वंडरफुल फैसिलिटी अवेलेबल अछि। एंड फॉर फर्दर डिटेल स्क्रीन रे एटी जो दीटा नंबर दिया जाईची सेथरे जाई की कांटेक्ट कर परिबे। ठीक अछि। सो अब आज टिके देखिदेबा कि कौन कौन टॉपिक्स आज हमें कवर करबा। जीएस 1 रो गोटे टॉपिक अछि, जीएस 2 रो एंड आई गेस जीएस 3 रो मे बी 5 to 6 टॉपिक्स अछि, वी विल सी। जीएस 1 रो अछि ओडिशा सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टेराकोटा क्राफ्ट। जीएस 2 रो टॉपिक अछि ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन ऊपर टॉपिक अछि। दिस मच केस आरटीआई केसेस एबे से सॉल्व करछदी, बट दिस इज नॉट मच इंपोर्टेंट कि केते केसेस सॉल्व होला, एटा इंपोर्टेंट कि अधिका केस सॉल्व हेची एंड ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन जेहेतु न्यूज रे अछि ता ऊपर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिबा। जीएस 3 रे ओडिशा सरपासेस नेशनल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, देन पीएम राहत ग्रीन हाइड्रोजन जेट्टी पारादीप पोर्ट रे हेची ता ऊपर न्यूज अछि। VSHORADS मिसाइल सेटा टेस्ट फाइल तार सक्सेसफुल हेची। रेयर टॉर्टोइज फेस एक्सटिंक्शन थ्रेट एट नीलपोखरी गंजाम। फर्स्ट एमसीक्यू एटी समस्त सॉल्व करंतु। प्रीवियस क्लास रे सीएसआर रिलेटेड गोटे न्यूज थिला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट ही एटी पचारची, व्हिच इज वेरी इजी क्वेश्चन, एटा इजी कैटेगरी रे जाय। प्रीवियस क्लास रे पिला माने भी लाइव चैट रे आरो ठीक आंसर दोथिले। सो स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 1% ऑफ प्रॉफिट्स, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स, 5% ऑफ रेवेन्यू, voluntary only. I am giving you 10 seconds and your 10 seconds starts now. Those who are live, do give me the answer. Yes, जो माने बी आंसर करछन्ती वेरी गुड, आंसर इज बी 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स एंड एटा को एक्ट अंडर रे आसे मन रखबे कंपनीज एक्ट अंडर रे आसे 2013 रो। एंड जो एलिजिबल कंपनी माने अछन्ती जो माने सीएसआर पाई की से माने कोन करिवे, से माने 2% तांकर जो एवरेज नेट प्रॉफिट रहइबो तार 2% से माने सीएसआर पाई की स्पेंड करिवे ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। Second question, a lower debt to GSDP ratio indicates high inflation, fiscal stress, strong fiscal sustainability, low growth. I am giving you 10 seconds.
रेशियोटा हाई हेले कौन हबो ए चारटा भितर तिथि कहउचंती सी हबो अच्छा एठी गोटे जिंस एठी नोटिस करंतु डेट टू जीडीपी जीएसडीपी व्हाटएवर जीएसडीपी जीडीपी हो जदि सेटा हाई होउची जदि ये रेशियोटा हाई बाहरिबो ताहाले कोन न्यूमरेटर अधिका थिबो माने डेट अधिका थिबो गवर्नमेंट ऊपर तो ताहाले सेटा स्ट्रांग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी केमिति हबो आंसर हबो ओके ratio indicates yes strong fiscal sustainability I'm sorry टिकेट देखिबा lower गोटे सेकंड गोटे ओ सॉरी एटी लोअर देजी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मुठी हायर रो कहली ठीक अछि त हायर जदी एटी डेट थिबो ताहले स्ट्रांग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी हबनी फिस्कल स्ट्रेस हबो तो एटी क्वेश्चन रे जेहेतु लोअर देजी माय मिस्टेक तो लोअर रे एटी स्ट्रांग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी हबो ओके सो लोअर डेट टू जीएसडीपी रेशियो माने एटी कोन डेट टा कम अछि गवर्नमेंट ऊपर ता माने होची स्टेट हैज मैनेजेबल डेट levels indicating better fiscal health and sustainability. Next, the Baraputra Aitihya Gram Yojana primarily aims to increase the industrial output, develop heritage villages of notable personalities, promote urban smart cities and provide farm subsidies. Yes. बी हबो काइना प्रीवियस क्लास रे हम पढ़िथिले कि जो हेरिटेज विलेजेस अछि नोटेबल पर्सनालिटीज मानकर ताकू डेवलप करबा को कथा चलची स्कीम रो एम ही होची कि जो लेगेसी को प्रिजर्व करबा ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर नेटिव विलेजेस इनटू हेरिटेज हब्स. Next, fiscal deficit refers to very easy question. Difference between exports and imports. Difference between total expenditure and total receipts, excluding borrowings. Difference between revenue and capital receipts, total public debt. Fiscal deficit कहले एठी simply definition जहार मने थिबो सी एठी आंसर तार करि परिबे. Okay, देखिबा आंसर ऑफ बी डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. फिस्कल डेफिसिट होची जो गवर्नमेंट रो टोटल स्पेंडिंग रहला जाको हम एक्सपेंडिचर कहूछु एंड तार टोटल इनकम जदी स्पेंडिंग टा खर्च इनकम थारु बढ़ी जाउची ताहाले सेटा गोटे डेफिसिट क्रिएट करची जाको हमें फिस्कल डेफिसिट बोली कहिताउ एंड एथिरे बोरोइंग्स इंक्लूड हो नै एटा मन रखिबे बोरोइंग्स एथिरे इंक्लूड हो नै. OPSC and UPSC ପାଇଁ କି ଏଠି ତିନିଟା optional batches launch ହେଇଛି PSIR, ODIA and Home Science optional and admission is currently open
एंड तीनटा जक ऑप्शनल रे आपन को सेम फैसिलिटी मिलिबो जेमति 100% सिलेबस कवरेज रहिबो, वन ऑन वन मेंटरशिप आपन को प्रोवाइड हबो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपन करिवे एंड ऑप्शनल रिलेटेड जहाँ भी नोट्स एंड मटेरियल्स रही आपनकर प्रिपरेशन पाई से गुडी को आपन को अवेलेबल करि दिया जिवो एंड एडमिशन इज करेंटली ओपन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट दिस नंबर। एबे हमें बढ़िबा आजिर क्लास को। आजिर क्लास जहाँ भी आमर टॉपिक्स अच्छी ताको हमें वन बाय वन कवर करिबा एंड किछि टॉपिक्स परे मु रिलेटेड बहुत ही इजी एमसीक्यूज वन लाइनर एमसीक्यूज मु एथरे ऐड करछि, तो समस्ते मते एठी लाइव चैट रे तारा आंसर देबे एंड फॉर द आंसर आउ एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्लेनेशन की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस होबो। ओडिशा सरपासेस नेशनल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हिसाब रे ओडिशा रो रेकॉर्ड हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रही एलएफपीआर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी ओडिशा रो हाई रही एंड स्टेट ओडिशा इट आउटपरफॉर्म्ड नेशनल एवरेजेस इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। एलएफपीआर कौन? एलएफपीआर होची इकोनॉमिक एंगेजमेंट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन कि केते वर्किंग एज जो पॉपुलेशन अछंती ता भितरु केते लोक ऑलरेडी काम करूचंती, को माने ऑलरेडी एम्प्लॉयड एंड को माने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट खोजुचंती सर्च करूचंती, दीटा जाको कैटेगरी एथरे जिबे एलएफपीआर रे। ओडिशा इज एंटरिंग ए डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज। 70% नियरली तार पॉपुलेशन सेटा एक्सपेक्ट करा जाउची कि से वर्किंग कमिंग डिकेड रे माने कमिंग 10 इयर्स भितरे वर्किंग एज को से एंटर करिवो एंड जो मेकानाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहला से एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को एबे रीशेप करूची। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रोची जेमती मु कहितली शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन जोटा कि एम्प्लॉयड और एक्टिवली सिकिंग वर्क दीटा जाक जिबे, केवल जो माने चाकरी करिसथि से माने ही जिबेनी, जो माने वर्क खोजुछथि सर्च रे अछथि एक्टिवली सिक करूछथि वर्क से माने भी एथरे जिबे एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होची शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड माने एई सेक्शन टा ओनली रही जिवो। ओनली जदि हम एम्प्लॉयड मानकु देखिबा ताकू हमें कहबा वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो एंड दीटा जाक रहिले सी हेबे एलएफपीआर रे जिबे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रे जिबे से रेशियो रे। फीमेल एलएफपीआर सेमती एटा गोटे जेंडर इंक्लूजन इन वर्कफोर्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहया गले गोटे एटा होची गोटे इकोनॉमिक एडवांटेज जेतेबेले कि अधिकार अधिका पॉपुलेशन से माने डेमोग्राफिक माने गोटे वर्किंग एज पॉपुलेशन को से माने एंटर करंती जोटा कि एबे हाई अछि इंडिया रे। मेजर फाइंडिंग्स कौन 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 डेटा मिली कि एलएफपीआर 58.1% जोटा 2022 रे थिला सेटू बढ़ी कि 64.5% हेई जाइछि। दिस डेटा इज वेरी इंपोर्टेंट। एई सब जो डेटा बाहर इकोनॉमिक सर्वे हैला कि बजेट हैला ए सब डेटा आपनकर प्रीलिम्स पई प्लस मेंस आंसर राइटिंग पई बहुत इंपोर्टेंट। जदि इकोनॉमिक्स र किछि आंसर लिखुचंदी आ से रिलेटेड किछि रिपोर्ट इंडिसेस फाइंडिंग रैंकिंग एमति यदि किछि डेटा प्रोवाइड कर दोचंदी ना ताहले एक्स्ट्रा यू विल गेट ब्राउनिंग पॉइंट्स। फीमेल एलएफपीआर सी भी 37.6 रु बढ़ी 48.7 हेची। जेंडर गैप रिड्यूस हेची। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इम्प्रूव हेची 55.1% रु बढ़ी 62.5%। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हेची 5.1% रु 3.1%। एई जो पांचटा एटी फैक्ट डेटा दिया जाइछि आकु पूरा कॉपी रे नोट करि नेबे, नहले पीडीएफ तो आपन को मिलि जिवो, बट मु कहबी एडवाइस करबी कि जेतेबेले क्लास करूछंदी तो एमती हे डेटा कि किछि कीवर्ड्स हला जोटा कि आपन लागुची कि आंसर रे मु जदि कीवर्ड टा पुट करबी ताहले आंसर टा आउरी भल लागिवो एंड जदि किछि सेमती किछि कांसेप्ट अछि जोटा नोट्स रे मेंशन नाही तो ताकू उठेइ ना क्लास रो साइमल्टेनियसली नोट करि चलथिबे। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न मेजॉरिटी एबे सेल्फ एम्प्लॉयड अछंदी। जो कैजुअल लेबर फॉर्म्स अछि फॉर्म्स आर नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप एंड रेगुलर सैलरीड जो वर्कर्स माने अछंदी दे फॉर्म द स्मॉलेस्ट शेयर। ओके, जो माने रेगुलर सैलरीड वर्कर्स अछंदी। एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज द लार्जेस्ट वर्कफोर्स। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एम्प्लॉय द स्मॉलर शेयर्स। ओके, एटा होची पैटर्न, एटा को मने रखिबे कि मेजॉरिटी एठी कोन अछंदी सेल्फ एम्प्लॉयड अछंदी। जो कैजुअल लेबर अछंदी से माने नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप। ओके, आफ्टर द सेल्फ एम्प्लॉयड वंस आ जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स माने रहिले से मानकर स्मॉलेस्ट शेयर अछि। एग्रीकल्चर लार्जेस्ट वर्कफोर्स। इंडस्ट्री और सर्विसेज रे दे एम्प्लॉय द स्मॉलर शेयर्स। सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय यस एटी जिबे एंड पीडीएफ आपण माने कमेंट सेक्शन रे लिंक प्रोवाइड हबो सेठु जाई कि डाउनलोड करि परिबे।
सिग्निफिकेंस कि जेते वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़िबो सेते इकोनॉमिक ग्रोथ आउरी ताकू सपोर्ट मिलिबो बूस्ट मिलिबो राइजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इट improves the inclusivity falling unemployment signals labor market strength and state को भी demographic dividend रो benefit मिलुची concerns कि एबे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऊपर हेवी रिलायंस रही जेमती मु कहली एठी मेजॉरिटी आर सेल्फ एम्प्लॉयड सो देयर इज हेवी रिलायंस ऑन देम एग्रीकल्चर एबे भी डोमिनेट करूची जॉब्स को क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वैरी करूची इनफॉर्मल सेक्टर इट रिमेन्स लार्ज वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार जो एआई ड्रिवन इकोनॉमी हमर हेई चलची मेकानाइजेशन एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब टेक्नोलॉजी जो आसी चललानी तो सेथिपाई कि प्रॉपर स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग न हेले तो जॉब पाइबारे एम्प्लॉयमेंट पाइबारे मुश्किल हो पारे सो स्किल डेवलपमेंट इज नेसेसरी प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इंक्रीज द फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करा जाओ देन वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को आहुरी स्ट्रेंथन करा जाओ सोशल सिक्योरिटी को एक्सपैंड करा जाओ फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स जो माने इनफॉर्मल वर्कर्स एटी देखिले दे आर इन लार्ज नंबर सो एक्सपैंड द सोशल सिक्योरिटी फॉर देम प्रिलिम्स फैक्ट आमे एटू कोन उठेबा एलएफपीआर केते एबे करंटली 64.5% फीमेल एलएफपीआर कोन 48.7% अनएम्प्लॉयमेंट एबे केते कमी की अछि 3.1% एंड ओडिशा एंटरिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज ओपीएससी ओएस जो माने एथरक प्रीलिम्स 2026 रे देबे से मानक पई कि जीएस1 एंड जीएस2 आई मीन जनरल स्टडीज एंड सीसैट पई कि कोर्स लॉन्च हेची जोतरे कि बोथ जीएस1 जीएस2 रो फुल सिलेबस कवरेज रहइबो 100% वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोवाइड हबो 36 टा टेस्ट रहउची नोट्स एंड मटेरियल्स आपन को प्रोवाइड कर दिया जिवो एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वेरी इंपोर्टेंट 19 इयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आपन को एटी प्रोवाइड हबो ओके and for more information contact this number online and offline both mode re eta conduct haba okay admissions are currently open ebe mcq ta solve karo previous topic upare lfpr re kon include hoje very easy question only employed only unemployed employed plus job seekers students aku ta 5 seconds hi debi yes correct chandray himbramkar answer aschi c is the correct answer okay odisha sets world record in terracotta craft gs1 ro topic eta odisha secured 2 entries in the world book of records at the grand terracotta craft creation event organized kara jaitila by handlooms textiles and handicrafts department 1000 artisans ethire participate करिथिले जोटा कि highest ever in single terracotta event terracotta होची oldest traditional craft in india ओडिशा रो गोटे रिच लेगेसी रही ऑफ क्ले बेस्ड हैंडीक्राफ्ट यूज्ड फॉर जेंति रिचुअल्स मानक पई कि पूजा पाठ पई कि यूज हुए देन हाउस होल्ड आइटम्स पई कि यूज हुए डेकोरेटिव आर्ट record set for highest number of participants 1000 एत्ते केबे पार्टिसिपेट को टेराकोटा क्राफ्ट इवेंट रे के करि नथिले एंड 7 आर्टिसंस ब्रोक ग्लोबल प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड्स टॉप परफॉर्मर्स किए सेबक राणा बरगढ़ रो क्राफ्टेड 310 क्ले ग्लासेस इन 1 आवर सरपास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड जोटा कि तांकर 212 आइटम्स जणे करथिले बाय माइकल वेबर इन यूएसए सी एबे 310 करिगिरी तांकर रिकॉर्ड को काटि चंती अदर नोटेबल आर्टिसन एटी टिके आपण गो थ्रू कर नेबे दिस इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव बट जस्ट टिके गो थ्रू करनो माधव मुदुली थाना सुंदर राणा रमेश चंद्र मुदुली विजय बेहेरा बसंत राणा मकर केतन साहू टेराकोटा क्राफ्ट होची इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल क्ले एंड ताकू नियारे सेकी सेकी की ताकू हार्डन करा जाए हार्डन्ड बाय फायरिंग यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स आइडल्स डेकोरेटिव आइटम्स एटा सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली जेहेतु एटा नेचुरल क्ले रु बना होची कल्चरल सिग्निफिकेंस रही जेमति ओडिसा रो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हेरिटेज अछि ताकू ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलुची आर्टिसन मानकर लाइवलीहुड एथरे बूस्ट हबो क्राफ्ट बेस्ड टूरिज्म एनहांस हबो इंडिया रो ट्रेडिशनल स्किल्स को एटा ग्लोबली शोकेस करा जिवो प्रमोट करा जिवो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव एटा गोटे जोटा कि फर्दर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को एनकरेज करिवो एंड
प्लास्टिक को रिप्लेस करिवो बट चैलेंज एटा कि एथिरे यूथ मानक जोटा भी देखिले कि ओडिशा हैला इंडिया हैला दे आर एंटरिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड जो यूथ माने हेले से मानकर टेराकोटा प्रति एतटा इंटरेस्ट नाही डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट अमंग यूथ कंपटीशन रही फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स ओके मार्केट एक्सेस भी इश्यू रही ब्रांडिंग एंड तांगर मॉडर्न डिजाइन सेटा भी केमती हबो तार भी एथिरे दरकार रही सो वे फॉरवर्ड की जो यंग आर्टिसंस माने रहिले तांकर स्किल ट्रेनिंग हो ई कॉमर्स सपोर्ट मिलू फॉर मार्केट एक्सेस जीआई टैगिंग ब्रांडिंग क्राफ्ट टूरिज्म रिचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट भी आर्टिसन मानन को मिलिले इट विल बी अ वंडरफुल सॉल्यूशन प्रिलिम्स फैक्ट आम एठू कोन उठेबा कि 1000 आर्टिसन एटी पार्टिसिपेट करथिले सेवक रा ना खाली गोटिए ना मने रखिबे बाकी ना मने रखिबा दरकार नै जे कि 300 क्ले ग्लासेस करथिले 1 आवर रे एंड 212 जे करथिले माइकल समथिंग करी कि मे बी थिला तांकर नाटा सॉरी आई एम फॉरगेटिंग यूएसए रो जे थिले तांकर सेटा से काटी चंदी प्रीवियस रेकर्ड 212 टा आइटम थिला यूएसए देन इवेंट ऑर्गेनाइज करा जाईची बाय ओडिशा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वैल्यू एडेड फीचर एठी कोर्स रो प्रोवाइड होची आपन को जोथरे कि टोटल लर्निंग इकोसिस्टम आपन प्रोवाइड हो जेम रिवीजन सपोर्ट मिलिबो लाइव इंटरेक्शन करि परिबे थ्रू वन ऑन वन मेंटरशिप एंड एक्सक्लूसिव रिसोर्स एंड मटेरियल्स नोट्स प्रोवाइड करा जिवो अलोंग विथ द 19 इयर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पीवाईक्यूज एंड मु जो कहली जो टेस्ट कंप्लीट पैकेज रहउची 36 टा टेस्ट रहउची जो प्रीलिम्स रो सेतरे तार ब्रेकडाउन होची कि जीएस1 रो 28 टा टेस्ट रहउची एंड ताको ब्रेक करा जाईची इनटू 22 सेक्शनल बा टॉपिक वाइज आपन को शेड्यूल मिलि जिवो एंड 6 टा फुल लेंथ पूरा प्रीलिम्स भलिया टेस्ट रहइबो VST टेस्ट रहइबो देन सी सैट रहइबो आपनकर 8 टा रहइबो देन 4 टा सेक्शनल रहइबो 4 टा फुल लेंथ टेस्ट रहइबो एंड केवल टेस्टिंग कंडक्ट होबनी साथ ही साथ आंसर कीज एक्सप्लेनेशंस एंड पोस्ट टेस्ट डिस्कशन क्लासेस भी कंडक्ट हबो टेस्ट बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे रहइबो फ्लेक्सिबल मोड रहइबो ऑनलाइन अपन जॉइन करि परिबे जदि आपन दरकार अपन ऑफलाइन जॉइन करि परिबे बेंचमार्किंग ऑल ओडिशा रैंकिंग प्रोवाइड हबो ताकि अपन आपन प्रिपरेशन को सही हिसाब रे कोठी लूप होल्स रहि गला कोठी केमती ताको मैनेज करिवे सेटा आपण देखिबे देन बोनस मटेरियल होची 1 ईयर नेशनल करंट अफेयर मैगजीन एथरे आपण को प्रोवाइड करि दिया जिवो ओके Terracotta craft is considered eco-friendly because it is chemical based, plastic made, clay based and biodegradable, metal coated. Very easy question. Yes, समस्ते करेक्ट आंसर देइछन्ती वेरी गुड पीएम राहत टू बी रोल्ड आउट इन ओडिशा ओडिशा एबे पीएम राहत को इम्प्लीमेंट करिया को जाउची एंड मीटिंग टी अनु गर्ग चेयर ताकू चेयर करथिले मीटिंग चेयर्ड बाय अनु गर्ग एम कोन कि प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को कैशलेस ट्रीटमेंट एथरे प्रोवाइड करिवा होची पीएम राहत रो एम बा पर्पस नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड इंडिया रे जानी थिबे कि रोड एक्सीडेंट फैटालिटी इज बहुत हाई सो ओडिशा रे एका की ही नियरली 16 डेथ्स डेली होची ड्यू टू एक्सीडेंट एंड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट accident पर is very crucial to reduce the fatalities to reduce the death rate and PM राहत होची गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो थे कि फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए इफ हॉस्पिटलाइज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट एटा मने रखिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट जदी प्रीलिम्स रे क्वेश्चन फ्रेम होबो ना से एठी किछि गोटे ताकू ट्विस्ट एंड टर्न करी 24 कि 22 कर देबे कि इमीडिएटली कर देबे सो फ्री ट्रीटमेंट सेति बेले प्रोवाइड हबो जदी ताकू एक्सीडेंट रो 24 घंटा भितरे हॉस्पिटलाइज करा जाइतिबो कवर्स अप टू 7 डेज ऑफ ट्रीटमेंट मैक्सिमम 1.5 लाख ये जो डेटा गुड़ा एटी देइछि दे आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स आई एम टेलिंग यू अगेन आपको नोट करिक रखंतु ठीक अछि फंडेड थ्रू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड linked to 112 emergency service for quick response SMS alert भी हॉस्पिटल को सेंड हे जिवो एंड की कांसेप्ट छे किछि हम देखिबा कि गोल्डन आवर कोन गोल्डन आवर होची
एक्सीडेंट धर हैला तार फर्स्ट आवर आफ्टर एक्सीडेंट जोटा कि बहुत ही क्रिटिकल थाए फॉर सर्वाइवल ऑफ द विक्टिम कैशलेस ट्रीटमेंट है प्रोवाइड विक्टिम्स मानन को अपफ्रंट पेमेंट करबा किसी दरकार नहीं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड द्वारा एटा फंडेड हम एटा गोटे डेडिकेटेड फंड क्रिएट करा जायछि फॉर एक्सीडेंट रिलेटेड जो केसेस रोचे सिग्निफिकेंस कौन कि एथरे एक्सीडेंट फैटालिटीज रिड्यूस हम जेतु तांको टाइमली ट्रीटमेंट मिलिबो इमीडिएट ट्रीटमेंट तांको मिलुची पुअर विक्टिम्स जो माने अछंती तांको सपोर्ट मिलुची इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम तो आपण देखिले केमती ताको स्ट्रेंथन करिके रखा जायछि एसएमएस अलर्ट जाउची देन आपण कोन करिवे तांकर 112 इमरजेंसी सर्विस भी याकू लिंक करा जायछि प्रमोटिंग रोड सेफ्टी गवर्नेंस चैलेंज की एबे भी पब्लिक माने एटा जानना दी धर जहार एक्सीडेंट होची तो सेमानक पाखरे ए इनफॉरमेशन ही नाही कि से माने पीएम राहत अंडर रे तांकू जो सुविधा सुजोग दिया जायछि से ताकू यूज करि परिबे सो देयर इज अवेयरनेस लैकिंग अमंग पब्लिक एंड हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस भी एथिरे एतेटा नाही एंड मॉनिटरिंग मिसयूज इज आल्सो देयर रूरल एक्सेस गैप्स आर आल्सो देयर वे फॉरवर्ड की डिस्ट्रिक्ट लेवल रेडीनेस को बढ़ा जाओ हॉस्पिटल रेडीनेस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो कि सेमाने भी जानतु जदि कोडी रोड एक्सीडेंट होची ताले से माने एई सुविधा अवेल करि परिबे हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपैंड करा जाओ डिजिटल मॉनिटरिंग हो इंटीग्रेशन विथ रोड सेफ्टी पॉलिसीज प्रिलिम्स फैक्ट एठु हमें कोन कोन उठेबा कि 24 घंटा एठी मु कहतली 24 आवर एलिजिबिलिटी एठी क्राइटेरिया गोटे रखा जायछि कि 24 घंटा भितर हॉस्पिटलाइज करा गले ही तांको ए सुविधाटा मिलुची 1.5 लाख कवरेज एठी रहिছে ओटा होची मैक्सिमम लिमिट 7 days फ्री केयर रही लिंक्ड विथ 112 इमरजेंसी सर्विस एंड एठी जो कोर्स रो फॉर्मेट फॉलो होची इट इज बियॉन्ड द डिवाइड एंड मूव ऑन ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन करती कि पर सब्जेक्ट से मैंने अलग अलग करी पढ़ाती इंटरलिंक करती नहीं सो देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म द सब्जेक्ट्स बाय इंटरलिंकिंग गोटे एनालिटिकल कैपेबिलिटी से माने फॉर्म करि पारंतिनी सो एथरे गोटे इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी एठी फॉलो होची जेठी सब्जेक्ट्स गुडी को दे आर लेयर्ड एंड कनेक्टेड रादर देन जस्ट स्प्लिट सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रु मूव करिके गोटे कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन एठी फॉलो होची एमसीक्यू टा सॉल्व करो गोल्डन आवर कौन एबे जस्ट मु पढ़ेली फर्स्ट डे आफ्टर एक्सीडेंट फर्स्ट वीक आफ्टर एक्सीडेंट क्रिटिकल फर्स्ट आवर फॉर ट्रीटमेंट इंश्योरेंस क्लेम पीरियड समस्ते करेक्ट आंसर दउछन वेरी गुड ऑल ऑफ यू गोल्डन आवर हमर कोन क्रिटिकल फर्स्ट आवर फॉर ट्रीटमेंट 797 crore rupees green hydrogen jetty at Paradip port मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सी गोटे 797 crore ग्रीन हाइड्रोजन जेट्टी पारादीप पोर्ट पाई की अप्रूव करिसेंती प्रोजेक्टटा इंप्लीमेंट करा जायछि बाय पारादीप पोर्ट अथॉरिटी अनाउंसमेंट मेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल बैकग्राउंड होजी इंडिया इज प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन इज वेरी ऑब्वियस एटा समस्त जानती है बेसिक इन्फॉर्मेशन एटा अंडर इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड पोर्ट्स एथिपाई की कोथिपाई इंपोर्टेंट पोर्ट्स इंपोर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स स्टोरेज इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स ग्रीन हाइड्रोजन होची सेही हाइड्रोजन जोटा कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करिकी प्रोड्यूस करा जाय थाए ताकू कुआ जाय ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन रो जीरो कार्बन एमिशन हुए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बॉट मॉडल होची प्राइवेट डेवलपर से कौन करिवे से माने फर्स्ट ताको बनेइबे बिल्ड करिवे देन से प्रोजेक्ट को रन करिवे बिफोर ट्रांसफरिंग तापर से कौन करिवे ना प्रोजेक्ट को बने की ताको रन करिके किछि टाइम पई तापर से गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देबे एठु आसीची नेम बिल्ड एंड रन द प्रोजेक्ट मींस ऑपरेट देन ट्रांसफर अमोनिया होची एटा गोटे हाइड्रोजन कैरियर हिसाब रे यूज करा जाय फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की फीचर्स कोन कि हैंडलिंग कैपेसिटी एठी रही 4 मिलियन टन्स पर ईयर
includes dedicated jetty storage system liquid cargo facilities भी रहिबो dredged depth रहिबो 14.3 meters project completion timeline रहुची एठी 2 वर्ष दिया जाउची 24 months 20% capital support by PPA सिग्निफिकेंस होची कि पारादीप पोर्ट को ये गोटे पोजीशन करूची ताकू गोटे पोजीशन दोची एज अ ग्रीन एनर्जी हब इट स्ट्रेंथन्स द एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन इकोनॉमी को एथरे सपोर्ट मिलुची कार्गो प्रोफाइल डाइवर्सिफाई होची देन ओडिसा जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम रहला सबको बूस्ट मिलुची इनिशियल कॉस्ट एथरे हाई सेफ्टी कंसर्न्स रोची कि हाइड्रोजन को से माने केमिति सेफली हैंडल करिवे टेक्नोलॉजी रेडीनेस ग्लोबल डिमांड अनसर्टनिटी वे फॉरवर्ड होची कि जो हाइड्रोजन वैल्यू चेन रहला ताको केमती स्ट्रेंथन करा जिवो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डेवलप करा जिवो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करा जिवो एक्सपोर्ट पार्टनरशिप एथरे केमती प्रमोट करा जिवो प्रीलिम्स फैक्ट एठू उठेबा की कैपेसिटी केते रहउची 4 मिलियन टन्स केते रहला पर ईयर एंड मॉडल रहइबो बीओटी मॉडल हमर रहइबो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल रहइबो then capital support 20% मिलिबो handles hydrogen and ammonia solve the MCQ ammonia को कौन पे यूज करा जाउची in hydrogen economy mainly for fuel combustion storage and transport electricity generation cooling correct answer वर्षा देवकी ओके चंद्रा हेम्ब्रम समस्त करेक्ट आंसर दोचंदी वेरी गुड एंड एटा तो मु जस्ट एबे डिस्कस कली बियॉन्ड द डिवाइड एंड मूव ऑन अप्रोच हमर रहउची जो कोर्स लॉन्च हेची ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन clears this much RTI cases number is not important କିନ୍ତୁ ଖାଲି 12928 ରହୁଛି 13000 ପାଖାପାଖି cases ସିଏ ଏବେ clear କରିଛନ୍ତି ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन disposed 12928 RTI cases in 10 months कम टाइम रे करଛନ୍ତି से बैकलॉग रिड्यूस हे आइची जोडा कि 22611 थिला टू 9688 केसेस इंप्रूवमेंट फॉलोड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मनोज परिडा एंड 3 न्यू कमिश्नर्स ओआईसी कौन एटा होची गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी मन रखिबे लक्ष्मीकांत रो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन टॉपिक्स अछि ताको भलसे पढ़ के जिबे काहे ना ओआईसी न्यूज रे अछि एनफोर्सिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एट द स्टेट लेवल हैंडल्स अपील्स कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन डिनायल केसेस की डेवलपमेंट्स होची जत्ते भी पेंडिंग केस थिला 2021 रो 22 रो ताको क्लियर कर दिया जाईची हियरिंग्स एबे अंडरवे अछि फॉर केस फाइल्ड इन 2025-26 monthly disposal rate ebe around 1500 cases ro rahichi transparency directives directed Odisha Public Service Commission to disclose the interview marks ordered OSSC Odisha Staff Selection Commission to provide skill test mark to all candidates ordered departmental inquiries where information were denied accountability measures कोन कि penalties ताको near worth 1.47 crores रो लागि छि imposed on officials 25000 penalty लागि छि on a police official in Ganjam for RTI violation just एटा just जानिबे मने रखिबे कि penalty लागु छि ओके official आउ जो भी पुलिस ऑफिशियल जो माने रहबे कि आरटीआई वायलेशन पेंगी ना पेनल्टी लागिबो काहा को लागि छि सेटा इट इज नॉट इंपोर्टेंट action against misuse crackdown on fake bpl card users okay frivolous repetitive application गोटे बलांगीर गोटे केस रहितला जोटा कि पुलिस को रेफर करते रहितला सिग्निफिकेंस होची कि एथरे ट्रांसपेरेंसी बढ़ुची अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ट्रस्ट आउ टाइमली एक्सेस केमती से माने इन्फॉर्मेशन को अवेल करि परिबे तांकर जोटा अधिकार रहिची राइट टू इन्फॉर्मेशन रहिची सेटा भी एन्श्योर होची चैलेंज की स्टाफ माने एबे एतरा नाहंती स्टाफ मान का शॉर्टेज अछि आरटीआई मिसयूज जदी प्रॉपर सब स्टाफ थानते ताहले केसेस आहुरी भी सॉल्व हे पारथांदा आहुरी अधिका केस सॉल्व हे पारथांदा क्लियर अप हे पारथांदा आरटीआई मिसयूज होची बाय सम एप्लीकेंट्स डिलेज इन इंप्लीमेंटिंग द कमीशन ऑर्डर्स वे फॉरवर्ड के आरटीआई सिस्टम को डिजिटल करा जाऊ मॉनिटरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ए सब को स्ट्रेंथन करा जाऊ एंड फ्रिवोलस एप्लीकेशन
नॉन सीरियस एप्लिकेंट्स जो माने रहिले बा मिसयूज जो माने करूछंदी आरटीआई को तो से मानको फिल्टर आउट करा जाऊ प्रिलिम्स फैक्ट आम कौन उठेबा कि 1200 928 केसेस एटा नियाई बट दिस इज नॉट अ वेरी इंपोर्टेंट प्रिलिम्स फैक्ट एतरा नंबर किछि पचारिबनी बैकलॉग रिड्यूस सिग्निफिकेंटली यस पेनल्टीज इम्पोज्ड फॉर डिनायल और डिले एटा इंपोर्टेंट कि पेनल्टी इम्पोज होची एमती भी क्वेश्चन फ्रेम हे पारे कि पेनल्टी एथि पई कि किछि इम्पोज होनी किछि एक्शन निया जाउची बट नो पेनल्टी एथरे इम्पोज हुए आरटीआई इंश्योर सिटीजन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन VSHORADS मिसाइल फ्लाइट ट्रायल सक्सेसफुल तीनटा सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स हेजी ऑफ VSHORADS conducted at Chandipur test revalidated capability against the high speed aerial threats and एटा किए डेवलप करछि DRDO modern warfare सेटा increasingly involve करूछि drones low flying aircraft and helicopters बहुत short range air defense systems ये ground forces को protect करूची फ्रॉम सच थ्रेट्स एटा होची गोटे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल जोटा कि बहुत सोल्जर एंड बैटलफील्ड द्वारा यूज करा जाए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहिले कोन मैन पैड्स कहिले कोन एटा होची शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम इट टार्गेट्स लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एंड एटा होची गोटे कोन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल आर की फीचर्स होची एटा इंडिजिनियसली डेवलप करा जायछि बाय रिसर्च सेंटर इमारत intercepts the enemy aircraft drones helicopters and it has speed range altitude vary kole bhi it has effective tested in final deployment configuration significance hochi tactical air defense self reliance e sabu ku enhance hochi support miluchi ground troops ku protect kara jauchi jehetu eta gote kono eta gote shoulder fired missile system सोल्जर्स माने बैटलफील्ड रे को यूज करि परिबे सो दे आर प्रोटेक्टिंग द ग्राउंड ट्रूप्स रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन सिस्टम्स कैन एडा इंडिजिनियसली डेवलप करा जाई छी चैलेंज होची कि काउंटर मेजर्स रही छी लाइक फ्लेयर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट दरकार आ पई कि रेडार सिस्टम सहित इंटीग्रेट करा जीवा पई कि दरकार वे फॉरवर्ड की जो आर्म्ड फोर्सेस रहिले ताकू आर्म्ड फोर्सेस रे इंटीग्रेट करा जीवा दरकार strengthen the layered air defense expand the indigenous defense ecosystem prelims fact एट उठेबा कि एटा कहा द्वारा डेवलप करा जे DRDO मैन पोर्टेबल मिसाइल टा चांदीपुर रे टेस्ट करा जायछि एंड लो ऑल्टीट्यूड थ्रेट को टारगेट करे रेयर टॉर्टोइजेस फेस एक्सटिंक्शन थ्रेट एट नीलपोखरी गंजाम न्यूज रे अछि जो रेयर टॉर्टोइज किछि रहिले नीलपोखरी गंजाम रे से माने एक्सटिंक्शन रिस्क को फेस करूचंती एंड कोथि पई कि व्हाट इज द कॉज ऑफ देयर एक्सटिंक्शन रिस्क इलीगल फिशिंग हैला विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी पुअर मेंटेनेंस बैकग्राउंड इज कि जो नीलपोखरी रही छी सेटा होची लोकली नोन एज ओडिशा सेकंड इंद्रयुम्ना सरोवर आफ्टर इंद्रयुम्ना सरोवर okay pond hosts a rare large tortoises locally called as kurma believed to have existed for nearly 500 years this is huge and freshwater tortoises emane aquatic ecosystem balance by important water quality ko bhi maintain kariya pa important protected species habitat protection and monitoring requirement pa ki darkar temple tanks as biodiversity sites traditional water bodies jo mane rahile they are often support the rare fauna जेठी जोटा हमें देखु कि रेयर टॉर्टोइज माने सेठी रहउचंदी कॉज ऑफ डिक्लाइन होची कि इलीगल फिशिंग एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को सेटू रिमूव कर देबा लाइटनिंग एंड फेंसिंग मेंटेनेंस नाही ओवर ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन वीक सर्वेलेंस ओके एंड तांकर सिग्निफिकेंस कोन कि एटा होची गोटे यूनिक हैबिटेट ओडिसा रा कल्चरल एंड इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस अछि इको टूरिज्म बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को सपोर्ट करछि ओके challenges are human interface institutional neglect lack of monitoring habitat degradation these are the challenges कि way forward कोन हबा दरकार what should be the solution सिक्योरिटी ऑफ फेंसिंग को रिस्टोर करा जाऊ एंटी फिशिंग हैबिटेट रिस्टोरेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एगुडा सब बढ़ा जाऊ रेगुलर मॉनिटरिंग हो बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रिलिम्स फैक्ट उठेबा कि लोकेटेड एटा कोठी लोकेशन कोठी नीलपोखरी रो गोलिया विलेज बुगुड़ा ब्लॉक ओके रेयर टॉर्टोइज माने जो रहिले तांको लोकली कुर्म बोली कहा जाए लिंक्ड हिस्टोरिकली टू पुरीज इंद्रयुम्ना सरोवर
Freshwater tortoises primarily contribute to air purification, aquatic ecosystem balance, soil erosion, desert formation. बी कहउछंती ओके एठी मु गोटे इंटरेस्टिंग जिंसो सिखौची क्वेश्चन जदि एमसीक्यू रे एई टैक्टिक टा अप्लाई करि परिबे जदि डायरेक्ट आंसर जणा नाही माने एलिमिनेट करिबारे एटा टिके हेल्प करे जदि क्वेश्चन पॉजिटिव अछि and it is asking for a positive solution or कौन सी प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन तो सब बेले पॉजिटिव ही हबो एटा बाकी क्वेश्चन रे भी अप्लाई करि परिबे जेते बेले टेस्ट देबे कि पीवाई क्यू एनालाइज करिवे तो एठी कोन कहूची कि प्राइमरीली कंट्रीब्यूट एठी देखिबे कि एटा गोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट अछि कि प्राइमरीली कंट्रीब्यूट कोथि पई कि करूची सी तो जदि ऑप्शन भी देखिबे एयर प्यूरिफिकेशन एटा गोटे पॉजिटिव सॉल्यूशन हैला aquatic ecosystem balance हैला बट soil erosion इट इज नेगेटिव consequence desert formation तो एटा को कैंसल आपण आराम से करि परिबे एंड बाकी ए जो दीटा रहिला नाउ डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज नाउ यू आर एट 50-50 OPSC OS prelims past 19 years रा पेपर्स ऑलरेडी 2006 रु नेकी 2025 जाए रिलीज हेई सारची सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज जेतेबेले आपण एग्जाम पाई कोनसी एग्जाम पाई प्रिपेयर करंती ताहले आपण माने जानिथिबे कि PYQs केते इंपोर्टेंट PYQ इज द बैकबोन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम क्वेश्चंस विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन and book is already launched. Okay, so that is it for today. Thank you for watching. Thank you for your patience. And jaha bhi ethi padha hala taro PDF ro link comment section re jaiki download kari nebe. And जो माने लाइव लेक्चर अटेंड करी नांदी से माने लाइव रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करिवे एंड MCQ को MCQ रा आंसर से माने कमेंट सेक्शन रे देई परिबे ओके थैंक यू